गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है पीएम प्रणाम। तो ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होगा कि कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है पीएम प्रणाम स्कीम को, जिससे कि स्टेट्स को इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि वो अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें और केमिकल फर्टिलाइजर्स को रिड्यूस करें। ठीक है। तो स्टेट्स को जो है बेसिकली 50% तक का जो है इंसेंटिव दिया जाएगा। मतलब समझ लो, अगर 3,000 करोड़ की सब्सिडी उनको जाती है, लेकिन अगर उन्होंने जो है 3,000 करोड़ की सब्सिडी जो है फर्टिलाइज़र पे बचा ली, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें से क्या करेगी कि उनके तो 3,000 करोड़ खर्च होने थे, उसकी बजाय वो 1,500 करोड़ रुपए जो है स्टेट्स को देंगे, ताकि जो है स्टेट्स ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइज़र को और डेवलपमेंट वर्क्स के ऊपर पैसा लगा सके। तो बेसिक एम यही है इसका कि बैलेंस्ड यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र के लिए स्कीम को लाया गया है। कोई सेपरेट बजट तो नहीं होगा। जो खर्चा सेंटर का फर्टिलाइज़र सब्सिडी में आ रहा था, उसको बचाने के लिए स्कीम लाई गई है, और उस पैसे को जो है स्टेट्स को दिया जाएगा। उस 50% पैसे को जो दिया जाएगा, जैसे जो 3,000 करोड़ में 1,500 करोड़ जो दिया गया है एग्जाम्पल में, तो उसमें से 70% जो है वो असेट्स क्रिएट करने में लगाएंगी स्टेट्स, और 30% जो है अवेयरनेस जनरेट करने में लगाएंगी फार्मर्स को कि आप जो है ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करो। इसके अलावा सल्फ़र कोटेड यूरिया का भी जो है इंट्रोड्यूस किया गया है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा, ताकि जो है सल्फ़र डेफिशिएंसी जो है सॉइल में उसको एड्रेस किया जा सके, और नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन जो है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है। अगर आप सल्फ़र कोटेड यूरिया लेके आते हो, तो नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, नेशनल रिसर्च फैसिलिटी। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 को, जिससे कि एक एपेक्स बॉडी बनाई जाएगी हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देने के लिए साइंटिफिक रिसर्च को कंट्री में। अब अगर हम इसके प्रोविजंस देखें, तो एनआरएफ बनाया जाएगा, जिससे कि आर एंड डी को प्रमोट किया जाएगा इंडिया में, और जो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है उसको रिपील कर दिया जाएगा। ठीक है। तो एनआरएफ क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी कहा गया था कि 50,000 करोड़ की लगभग हमको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है एनआरएफ को बनाने के लिए 2023 और 2028 के बीच में, जिसमें से गवर्नमेंट जो है 10,000 करोड़ रुपये लगाएगी अगले 5 साल में, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो लगभग 36,000 करोड़ रुपये जो है इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा। इसको गवर्न करने के लिए गवर्निंग बोर्ड भी जो है बनाया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर जिसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होंगे। इस गवर्निंग बोर्ड में एमिनेंट रिसर्चर्स और प्रोफेशनल्स भी जो है वो मेंबर्स होंगे। और एनआरएफ की फंक्शनिंग को जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल देखेगा, जिसको जिसको हेड करेंगे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया जा रहा है ये नेशनल रिसर्च जो है एनआरएफ को क्यों बनाया जा रहा है? ताकि जो है ग्रेटर पार्टिसिपेशन लाई जा सके साइंटिफिक रिसर्च में प्राइवेट सेक्टर से, और रिसर्च फंडिंग को प्रायोरिटाइज़ किया जा सके, कोलैबोरेशंस की जा सके इंडस्ट्री में, अकेडमिया में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, और एक इंटरफेस मैकेनिज्म बनाया जा सके ताकि जो भी पॉलिसीज़ हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उनको हम ठीक से उसके ऊपर फोकस रख सकें। इसका सिग्निफिकेंस भी यही है, डेमोक्रेटाइज़ कर रहे हैं हम साइंस फंडिंग को। बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेटजिक प्रॉब्लम्स हैं जो कंट्री में, सोसाइटी में, उसको एड्रेस करने के लिए सॉल्यूशंस ढूंढे जाएंगे, और इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक पूरा बनाया जाएगा, ताकि जो है रिसर्च जो है हमारी साइंटिफिक रिसर्च वो बिल्कुल भी अब सफ़र ना करे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट रिपोर्ट इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली जो यूएन सेक्रेटरी जनरल ने रिपोर्ट पब्लिश की है चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, उसमें इंडिया का इस बार नाम नहीं है, लेकिन साल 2010 से इंडिया का नाम आता था, लेकिन इस बार जो है वो नाम नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने कहा है कि हम बहुत सारी पॉलिसीज़ लेके आए हैं 2019 से खासकर। हम जैसे कि सिक्योरिटी फोर्सेस को हमने चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन में ट्रेनिंग देने की जो है शुरुआत की है। पैलेट गन्स का जो है वो इस्तेमाल बंद कर दिया है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लेके आए हैं, प्रोटेक्शन पॉक्सो एक्ट लेके आए हैं। उसकी वजह से जो है गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स की वजह से जो है यूएन ने रिकग्नाइज़ किया है कि जो है अब इंडिया में बच्चों की जो है लाइफ को वॉर्स में खतरा नहीं है, या कन्फ्लिक्ट सिचुएशन में खतरा नहीं है। तो यह चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट रिपोर्ट होती क्या है? तो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ सेक्रेटरी जनरल के चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट के लिए, वो इसके लीडिंग यूएन एडवोकेट होते हैं। एनुअली रिपोर्ट देते हैं वो कि एक चाइल्ड सोल्जर्स हमारे वर्ल्ड में कितने जो हैं वो प्रेजेंट हैं इस टाइम पर, और फिर अवेयरनेस जनरेट की जाती है कि कैसे इन चिल्ड्रन को बचाया जा सकता है, इनकी अब्यूज़ को कैसे रोका जा सकता है। जनरल असेंबली और ह्यूमन राइट्स काउंसिल दोनों की जो है ये रिपोर्ट सबमिट की जाती है। अगर हम इस साल की रिपोर्ट देखें, तो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट जो है वो जो है उसकी वजह से चिल्ड्रन की जो है वायलेशंस हुई है, उनकी राइट्स की वायलेशन हुई है।
लगभग 18,000 से ज़्यादा बच्चों को जो है वो इससे इफ़ेक्ट हुए हैं। और ख़ासकर म्यांमार में 140% जो है ग्रेव वायलेशंस देखी गई हैं कि वो इंक्रीज़ हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्रिटिकल मिनरल्स। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक एक्सपर्ट कमेटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है, उन्होंने 30 मिनरल्स आइडेंटिफाई किए हैं जो कि क्रिटिकल हैं इंडिया के लिए, जिनमें कि लिथियम और वेनेडियम दोनों ही इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल मिनरल्स क्या हैं? एक मेटेलिक और नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स जिनके दो कैरेक्टर्स होते हैं बेसिक। पहला तो कि वो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की फंक्शनिंग में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, और उनकी जो है सप्लाई चेन्स जो है वो डिसरप्ट हो सकती है, उसका रिस्क रहता है। ठीक है, उनकी क्रिटिकलिटी ही जो है वो टाइम के साथ चेंज हो जाती है, और सोसाइटी की नीड के हिसाब से जो है वो उनकी क्रिटिकलिटी चेंज होती रहती है। अगर हम उनके एप्लीकेशंस देखें तो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ बनाने के लिए उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लो एमिशन टेक्नोलॉजी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विंड टर्बाइंस, ये सब बनाने में भी उनका बहुत बड़ा रोल होता है। टॉप प्रोड्यूसर कौन सी कंट्रीज़ हैं? चिले, इंडोनेशिया, कॉन्गो, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लैंसेट ड्रोन। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो लैंसेट ड्रोन जो है वो यूक्रेन को बहुत तंग कर रहा है फ्रंट लाइंस में पिछले कुछ महीनों से। लैंसेट ड्रोन जो है वो एक हाई प्रिसीजन कैमिकाइज ड्रोन है जो रशियन आर्मी ने बनाया है रिमोट ग्राउंड और सी टारगेट्स को जो है वो स्ट्राइक करने के लिए। एक्स शेप्ड विंग्स होते हैं इसमें। इसकी मैक्सिमम रेंज लगभग 40 किलोमीटर की होती है। ये मैक्सिमम पेलोड लगभग 3 किलो का उठा सकता है। सेंसर्स और एक्सप्लोजिव वॉरहेड्स भी जो हैं इसमें होते हैं। ये एयर में लगभग 30 मिनट तक रह पाता है। ठीक है, और अपने टारगेट को हिट कर लेता है। ठीक है, केमिकल्स ड्रोन्स क्या होते हैं? बेसिकली सुसाइड ड्रोन्स हैं जिनका टारगेट यही है कि जब जो है टारगेट के पास पहुंचेंगे तो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेंगे और उससे जो है नुकसान पहुंचाएंगे, है ना। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्टेट ऑफ आर्मामेंट्स, डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। तो ये सिप्री जो है आपका, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी टॉपिक आपके ऑफकोर्स सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सिप्री की एनुअल असेसमेंट रिपोर्ट आई है जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो है उसके बारे में बता रही है। तो स्वीडन बेस्ड सिप्री ने जो है इसको लॉन्च किया है, और इसमें बताया गया है कि जनवरी 2023 के अगर हम देखें तो लगभग वर्ल्ड में 9,576 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। 3844 वॉरहेड्स तो इसमें से वो हैं जो मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट्स में लगाए गए हैं, और लगभग 2000 वो हैं जो रशिया और यूएस को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि चाइना के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो 340 से बढ़ के 410 हो चुके हैं। इंडिया के भी जो है 160 से बढ़ के वो 164 हो चुके हैं, और पाकिस्तान के भी जो है वो 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो चुके हैं जनवरी 2023 तक। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ज़ीरो एफआईआर। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली मणिपुर में देखा गया है कि 30% जो एफआईआर जो हैं वो रिपोर्ट की गई हैं वो ज़ीरो एफआईआर्स हैं, और पुलिस ने ही उनको खुद जो है सुओ मोटो उस पर एक्शन लिया है रिस्पेक्टिव ऑफ जुरिस्डिक्शन। तो ज़ीरो एफआईआर क्या होती है? जनरली आपको पता है ना कि जब एफआईआर जब जो है लिखी जाती है तो जिस एरिया में क्राइम हुआ होता है वहाँ का पुलिस स्टेशन जो है एफआईआर लिखता है, लेकिन ज़ीरो एफआईआर में जुरिस्डिक्शन नहीं देखी जाती। उसमें पुलिस चाहे किसी भी थाने की पुलिस हो, चाहे कहीं भी क्राइम हुआ हो, आप ज़ीरो एफआईआर लिखवा सकते हो और उस पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है। ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? जब जस्टिस वर्मा कमेटी ने निर्भया गैंग रेप केस में जो है कहा था कि ज्यूरिसडिक्शन की वजह से जो है किसी को भी अगर इंसाफ नहीं मिल रहा है, पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, तो वो गलत है। इसलिए ज़ीरो एफआईआर का कंसेप्ट लाया गया था ताकि ऑब्लिगेशन लाई जा सके पुलिस के ऊपर कि वो इन्वेस्टिगेशन शुरू तो करें, एक्शन तो करें, ताकि क्रिमिनल लॉ जो है वो मोशन में तो आए कम से कम। ठीक है, तो सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी में जो है ये ज़ीरो एफआईआर जो है वो लॉन्च की जाती है, और पुलिस जो है अपनी छानबीन उसमें उसके बेसिस पर शुरू कर देती है। ऑब्जेक्टिव यही है इसका, डिले को अवॉइड करना, टाइमली जो है वो एक्शन लेना, ताकि जो है क्रिमिनल नेक्सस यह है या फिर जो पुलिस का जो एक्शन है क्रिमिनल्स के अगेंस्ट वो जल्दी से जल्दी लिया जा सके। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is PM Pranam. This topic is important for your governance section and your economy section also. So central government has recently approved a new scheme called PM Pranam to incentivize states to promote alternative fertilizers and reduce the use of chemical fertilizers. So PM Pranam basically stands for PM Program for Restoration, Awareness, Nourishment and Amelioration of Mother Earth. And the objective of the scheme is to reduce the use of chemical fertilizers. And this, how it would be done? By incentivizing states. So states would be incentivized if they
reduce the use of chemical fertilizers. So 50% of their savings would be incentivized to them. So let's suppose that they save about 3,000 crore worth of subsidies which were otherwise going towards conventional fertilizers. Then of course 1,500 crore would be paid to them, and out of those 1,500 crores they would have to use 70% of this grant to create assets for the technology adoption and of alternative fertilizers, and 30% of that money out of that 1,500 crore rupees they can use it for reward and encouraging farmers and generating awareness about the alternative fertilizers. Apart from that, sulfur coated urea has also been introduced by the Cabinet Committee on Economic Affairs so as to address the sulfur deficiency in the soil. So sulfur coated urea is more economical and efficient than other kinds of urea, and nitrogen absorption in conventional urea is just 30%, but neem coated urea has a nitrogen absorption of 50%, nano urea has 80%, whereas sulfur coated urea will also have nitrogen absorption capacity of about 78%. Okay, so the next topic is National Research Facility. This topic is important for your science and tech section and also your governance section. Union Cabinet has recently approved the National Research Foundation Bill 2023, and it will establish the apex body to provide high level strategic direction to scientific research in the country. So what are the features of this bill? So of course NRF will be established, which will seed, grow and promote R&D and foster a culture of research and innovation throughout India. And the bill will also repeal the Science and Engineering Research Board. What is NRF? So NRF is basically as per the recommendations of National Education Policy. NRF will be established at a total estimated cost of 50,000 crores from 2023 and 2028, out of which government will contribute 10,000 crore rupees over 5 years, and close to 36,000 crore is expected to be coming from the private sector. So the governing board will be, of course, administrating this NRF. It will consist of Prime Minister as the ex officio president, and the governing board will also have certain eminent researchers and professionals across disciplines. NRF will also be governed by Executive Council, which will be chaired by the Principal Scientific Advisor to the Government of India. So what is the objective behind creating NRF? So as to ensure that scientific research was conducted and funded equitably, and greater participation of private sector is there. That's why NRF becomes necessary. It will also prioritize research funding. It will forge collaborations. It will create an interface mechanism between academia, government departments and industry, and it will focus on creating a policy framework so that regulatory processes can be put in place to encourage collaboration and increase spending by the industry on R&D. So this is also the significance of NRF. It will democratize the science funding. It will also find solutions to the big problems which are faced by Indian society, and it will also provide us an efficient and integrated management system. Okay. So the next topic is Children and Armed Conflict Report. This topic is important for your social issues and your international relations. Recently, an annual report of UN Secretary General has been published, which is called the Children and Armed Conflict Report. And in this report, after 2010, India's name has been dropped, and Ministry of Women and Child Development has said that due to our efforts, due to the efforts of the government, various policies and institutional changes of the government since 2019, we have come out of this bad image. So certain measures have been taken by the government, like our security forces have been trained to protect children, and we have also suspended the use of pellet guns, and Juvenile Justice Act and the POXO Act have been implemented so as to give relief to the children who are prone to prone to abuse. Okay, so what is this Children and Armed Conflict Report? The special representative of the UN Secretary General for Children and Armed Conflict serves as the leading advocate of this report, and this annual report presents a comprehensive picture of child soldiers and how they are being used and how they are being abused in any conflict or armed conflict. So this special representative raises awareness about the plight of these children, and this report is also given annually to General Assembly and the Human Rights Council. So what are the highlights of this year's report? So as per the report, the armed conflict on children and information on violations this is highlighting the impact of armed conflict on children and information on violations. So about
18,890 children have been affected, and there has been the most increase has been seen uh, in the country of Myanmar, where the conflict has seen 140% rise in the grave violations of children abuse. So the next topic is critical minerals. This topic is important for your economy section. An expert committee has been set up by the central government to identify 30 minerals as critical minerals, and it has included lithium and vanadium also, which are generally used in manufacturing of batteries. So what are critical minerals? They are metallic or non-metallic elements which are important for the functioning of our modern technologies, and there is a risk that its supply chain could be disrupted because of its significance or strategic significance. The criticality of these minerals change with time and the society's need also. Okay, so generally they are used for the manufacture of advanced technologies like mobile phones, computers, fiber optic cables, etc., and they are mostly used in low emission technologies also, okay, like electric vehicles, wind turbines, etc. And the top producers of these critical minerals are Chile, Indonesia, Congo, China, Australia, and South Africa. So the next topic is Lancet drone. This topic is important for your security section. So the Lancet drone has been become a threat to Ukraine's front lines in the last few months. So Lancet drone is a high precision kamikaze drone which is operated by the Russian army to strike remote ground and sea targets, and it is recognizable by its distinct X-shaped wings. It has a maximum range of about 40 kilometers, and it can carry a maximum payload of about 3 kgs of sensors and explosive warheads, and it can stay in the air for about 30 minutes. What is a kamikaze drone? It's basically a suicide drone which is basically designed to self-destruct after serving its purpose, that is targeting the enemy. So the next topic is state of armaments, disarmament, and international security. This topic is important for your security section. According to CIPRI's annual assessment report called this State of Armaments, Disarmament, and International Security, the global inventory of nuclear warheads has increased over the past year. So this report has been given by Sweden's CIPRI, and as per this report, as on January 2023, the world has seen 9,576 nuclear weapons, and 3,844 warheads were deployed with missiles and aircraft. About 2,000 of these deployed weapons belong to Russia and US. Okay, uh, if we look at the China's uh, if we look at the arsenal of nuclear arsenal of China, then it has increased from 340 warheads to 410 in January 2023. There has also been an increase of nuclear warheads between of India and Pakistan also. Okay, so the next topic is zero FIR. This topic is important for your governance section. Recently in Manipur violence incidents, nearly 30% of the FIRs were zero FIRs, which were filed suo motu by the police, irrespective of the jurisdiction. So what is a zero FIR? Basically, generally you know that an FIR is filed in an area where the offense is committed because of jurisdictional purposes, but in zero FIR, the police cannot claim that this particular offense has not happened in our jurisdiction. That's why we cannot file an FIR. So zero FIR is basically it can be filed anywhere in any police station, irrespective of the crime committed or the area where the crime has been committed. So it was introduced on the recommendation of Justice Verma committee after the Nirbhaya gang rape case, because we wanted to put a legal obligation on the police to at least start the investigation and take quick action without using the excuse of absence of jurisdiction. Okay, so as per section 154 of the CRPC, the police has been the main purpose of this FIR is to set at least the criminal law into motion. Okay, after that, once the criminal law is put into motion and the police starts investigation, after that it could be decided which is the which jurisdiction or where the jurisdiction of this crime lie. Okay, so the objective of course is to avoid the delays and to ensure that this timely jurisdiction is taken immediately after the registration of the FIR, and to make sure that investigation is done properly and it proceeds faster than the previous status. Okay, so these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.